कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। इस वीडियो सीरीज में आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। Hello everyone, welcome to iExamB. I am Vidhika, Law Faculty at iExamB. Before moving further, I'd like to ask you to subscribe to our channel to stay tuned with such important conceptual videos and other exam related information. Don't forget to click the bell icon. आप हमें reach out कर सकते हैं on this email ID. You can call us on this number and you can also visit our website. कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे वीडियो सीरीज में अब तक हम 6 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 7th कॉन्सेप्ट ऑन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। Now when we talk about the types of securities that are available in the market, first classification is based on shares. In this there are equity shares and preference shares. Then second one is debt. In this there are debentures and bonds. Third is derivatives. In this there are 4 types of derivatives: forwards, futures, options and swaps. Fourth one is depository receipts. Here we have American depository receipt and global depository receipt. And the fifth one is government securities. In this we have GSEC, government securities and government bonds. So we will discuss about shares, debt and depository receipts in this video. In the next conceptual video, we'll be discussing derivatives in detail and we'll also discuss government securities in our subsequent videos, the various types of GSEC and government bonds. So starting with the first one, that is shares. जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो आई होप आपको याद हो इक्विटी फाइनेंसिंग एंड डेट फाइनेंसिंग। जब भी कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू कैपिटल रेज करती है तो वो इन्वेस्टर्स को शेयर्स इश्यू करती है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स which a company issues to the investors. In this, the first one is equity share capital. Equity shares are those instruments which are issued by companies to raise capital and it represents the title to the ownership of the company. An investor becomes the owner of a company by subscribing to and by being allotted the equity capital or by buying its shares from the existing owners by trading on the stock exchanges. अब इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, विद वोटिंग राइट्स एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज। इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स, इसमें क्या होता है कि मान लो ए इज अ पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड इन अ कंपनी और उस कंपनी का उसने 10% शेयर खरीद लिए। So that means he now has 10% ownership in the company and around 10% voting rights in the company. ये होता है equity share capital with voting rights. Equity share capital with differential voting rights as to dividend voting or otherwise में क्या होता है, even if A holds 10% of the shareholding in the company, 10% shares उन्होंने खरीद लिए हैं, still he will have less voting rights. Let's try to understand with one example. If you talk about Facebook, तो फेसबुक में मार्क जकरबर्ग के 14% शेयर्स हैं, शेयर होल्डिंग 14% ही है, बट ही होल्ड्स 51% वोटिंग राइट्स इन द कंपनी। तो वो कैसे हुआ? इसका मतलब उसके एक शेयर में वोटिंग राइट ज्यादा है एंड उसका ऑपोजिट क्या होगा, जो पब्लिक के पास 86% शेयर होल्डिंग है उसमें उनके पास 49% वोटिंग राइट्स ही हैं। तो इसका मतलब डीवीआर शेयर्स में अगर एक पार्टी के पास एक शेयर के एस्पेक्ट में लेट्स से ट्वाइस वोटिंग राइट्स है या थ्राइस वोटिंग राइट्स है, तो जो ऑपोजिट पार्टी होगी, जो पब्लिक होगी, जो बाकी इन्वेस्टर्स होंगे उनके पास हाफ या 1/3 वोटिंग राइट्स होंगे। तो इस तरीके से इक्विटी शेयर कैपिटल विद डीवीआर शेयर्स इज हैपनिंग। अब क्यों इशू करते हैं या इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करेंगे एक कंपनी में जिसमें डीवीआर शेयर्स इशू हो रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी डीवीआर शेयर्स इसलिए इशू करती है क्योंकि कंपनी को कैपिटल तो रेज करना है but the owners, promoters or management does not want to let go of the control of the company. इसलिए वो डीवीआर शेयर्स इशू करते हैं। अब इन्वेस्टर्स क्यों डीवीआर शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे? बिकॉज उस कंपनी की वर्थ इतनी होगी कि उनको लगेगा कि इवन इफ दे डोंट गेट वोटिंग राइट्स दे विल हैव प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। द नेक्स्ट काइंड ऑफ शेयर कैपिटल इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसमें प्रेफरेंस दी जाती है शेयर होल्डर्स को। These carry preferential rights with respect to the payment of dividend and repayment of capital at time of winding up. तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि कंपनी वाइंड अप होने वाली है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट की रीपेमेंट होती है, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है एंड एट द एंड अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है। इफ वी सी विद रिस्पेक्ट टू द वोटिंग राइट्स,
Then in equity shares with voting rights, every equity shareholder has voting right in proportion to his share in the paid up equity share capital of the company. They has a right to vote on every resolution which is placed before the company. When we are talking about equity share with differential voting rights, here the voting power in respect of DVR shares shall not exceed 74% of the total voting power, including voting power in respect of equity shares with differential rights issued at the point of time. तो जो भी वोटिंग पावर डीवीआर शेयर्स के रिस्पेक्ट होती है वो 74% से ज्यादा किसी की भी नहीं होनी चाहिए. Then preference shares. In preference shares, they vote only on resolutions which directly affect their rights. So equity shareholders with voting rights, they vote on every resolution, while preference shareholders only vote on resolutions which directly affect their rights. जैसे कि resolution for winding up of the company, any resolution for repayment or reduction of company's equity or preference share capital. However, there is a situation when preference shareholders vote on every resolution in the company in case their dividend has not been paid for a period of 2 years or more, then they can vote on all resolutions which are placed before the company. अब हमने इक्विटी शेयर कैपिटल पढ़ लिया जिसमें हमने विद वोटिंग राइट्स विद डीवीआर राइट्स पढ़ा है और प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा है. इसके अलावा दो शेयर्स और हैं जिनको हम काफी फ्रीक्वेंटली सुनते हैं. वन इज स्वेट शेयर्स एंड द अदर वन इज ESOPs. नाउ व्हाट आर दीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, ये आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में. अगर आपको सिर्फ स्वेट शेयर्स का पता है तो वो लिखिए, ESOPs का पता है तो वो लिखिए, और अगर दोनों के बीच का डिफरेंस पता है तो उसे भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. मूविंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज डेट. इसमें दो टाइप्स हैं, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है विच इंडिकेट्स अ डेट ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी with or without creating a charge on the assets of the company. तो यहाँ पर डिबेंचर्स शेयर्स की तरह ही होते हैं. यहाँ पर कंपनी के एसेट्स पर कोई चार्ज क्रिएट होना जरूरी नहीं है. दिस इज इशूड बाय द कंपनी एज अ सर्टिफिकेट ऑफ इंडेटनेस and specifies the date of redemption, terms of repayment of principal, payment of interest at a specified date. तो एक कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, एक डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह. नाउ कमिंग टू बॉन्ड्स. Bonds are similar to debentures. They are also debt instruments. They have a maturity repayment and interest payment obligations. Difference क्या है डिबेंचर और बॉन्ड्स में? इंडिया में डिबेंचर्स यूजुअली कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और बॉन्ड्स यूजुअली डिनोट करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूनिसिपैलिटीज या गवर्नमेंट कंपनीज ने इशू किए हों. सो दिस इज द डिफरेंस. अदरवाइज मोर और लेस डिबेंचर एंड बॉन्ड्स इज वन एंड द सेम थिंग. अब बॉन्ड्स में भी दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स एंड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स. Zero coupon bonds, they do not pay any coupons during the term of the bond. The zero coupon bonds are issued at a discount to the face value and they are redeemed at face value. While floating rate bonds are instruments where the interest rate is not fixed but it is reset periodically with reference to pre-decided benchmark rate. तो एक बेंचमार्क रेट, एक रेंज डिफाइन की हुई है, उसके हिसाब से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट वैरी कर सकता है. दे डोंट हैव फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट. We'll talk about derivatives in our next conceptual video. Now coming to depository receipts. Depository receipt is a financial instrument that allows investors to invest in the equity of foreign companies. तो जब हम shares या equity shares या preference shares की बात कर रहे थे, through this an investor can invest in a company in India. But when an investor wants to invest in the equity of foreign company, that is done through depository receipts. अब इसमें दो टाइप्स के हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट इज अ वे ऑफ ट्रेडिंग नॉन यूएस स्टॉक्स ऑन द यूएस एक्सचेंज. तो जब इंडियन कंपनीज यूएस मार्केट से फंड रेज करना चाहती हैं, कैपिटल रेज करना चाहती हैं, तो वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करती हैं और फॉरेन इन्वेस्टर, यूएस का इन्वेस्टर इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स. And these shares which are issued by Indian companies is on the American Stock Exchange. These shares are held by a foreign branch of an international bank and shares are traded as domestic shares but are offered for sale globally through various bank branches. On the other hand, global depository receipts are similar to ADRs except that it is listed on an exchange outside the US and facilitates the issuer to raise funds simultaneously in different markets. That means it allows foreign funds to trade on the exchange outside its home country.
तो अगर अमेरिकन मार्केट से किसी इंडियन कंपनी को फंड रेज करना है तो दे विल इशू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स. अगर किसी को आउटसाइड अमेरिका फंड्स रेज करना है सो दैट विल बी थ्रू ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स. इवन अमेरिकन कंपनीज, even US companies can raise capital through global depository receipts. Thus, through ADRs, foreign companies can trade in the US market. Through GDRs, global depository receipts, foreign companies can trade in non-US markets. Then here we have one more, that is Indian depository receipts. Indian depository receipts is a way for a foreign company to raise money in India. Foreign companies would issue shares to Indian depository, which would in turn issue depository receipts to investors in India. So that is all about the depository receipts. About government securities, we'll be talking in a separate conceptual video. Now we should think, where is this term securities defined? We have talked about the types of securities, but what do we understand by the term securities and where is it defined? It is defined under Securities Contract Regulation Act 1956 under Section 2H. Securities include shares, scrips, stocks, bonds, debentures, debenture stock or other marketable securities of a like nature in or of any incorporated company or other body corporate. तो shares हम पढ़ चुके हैं. Scrips क्या होता है? Scrip is a kind of substitute or alternative to legal tender. Scrip is kind of a document that can be used in place of legal tender. Basically, scrip एक substitute या alternative होता है to the currency, to the money. स्टॉक मार्केट में स्क्रिप्स यूजुअली स्क्रिप डिविडेंड की फॉर्म में इंट्रोड्यूस होते हैं. स्क्रिप डिविडेंड इट रेफर्स टू अ सर्टिफिकेट दैट अ कंपनी गिव्स टू इट्स शेयर होल्डर्स इंस्टेड ऑफ गिविंग देम कैश डिविडेंड्स. बहुत कॉमन एग्जांपल ऑफ स्क्रिप्स इज गिफ्ट वाउचर. यहाँ पर आप मनी नहीं पे कर रहे हो, आपने अमेजोन का गिफ्ट वाउचर ले लिया या फिर आपने मिंत्रा का गिफ्ट वाउचर ले लिया, वो सब आपके स्क्रिप्स में आ जाते हैं. देन स्टॉक्स इज अ कलेक्शन ऑफ शेयर्स. तो अगर ए के पास लेट्स से 5% शेयर होल्डिंग है एबीसी लिमिटेड में और 2% शेयर होल्डिंग है XYZ लिमिटेड में, तो जो एक शेयर होगा उसे तो हम शेयर बोलेंगे, चाहे वो एबीसी का हो चाहे वो XYZ का हो. दिस ग्रुप, दिस कलेक्शन of shareholding of A in different companies which represents the part ownership in one or more organization is called stock. बॉन्ड और डिबेंचर हम पढ़ चुके हैं. अब हम आते हैं डिबेंचर स्टॉक्स पर. डिबेंचर स्टॉक, दो द वर्ड इज डिबेंचर बट दे वर्क मोर लाइक शेयर्स, मोर लाइक प्रेफरेंस शेयर्स. सो डिबेंचर स्टॉक होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड पेमेंट्स एट फिक्स्ड इंटरवल्स. डिबेंचर्स में इंटरेस्ट पेमेंट होता था, डिबेंचर स्टॉक में डिविडेंड पेमेंट भी होगा. Next part of the definition is derivative. This we will study later. Then units or any other instrument issued by any collective investment scheme to the investors in such schemes. Collective investment scheme को SEBI Act में define किया हुआ है. And when a group of people come together in order to invest in a scheme with the intention that they will earn some property, some profit or some money from that investment is a collective investment scheme. और उस collective investment scheme के units या किसी भी instrument को security कहा जाता है. Next is security receipt as is defined in clause ZG of section 2 of SEBI Act. SEBI Act में security receipt issue की जाती हैं to QIBs, qualified institutional buyers. इसमें होता क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसे एक बैंक का एनपीए लोन एक्वायर करके रिकवर करना है, उस एक्विजिशन के लिए एआरसी को बहुत सारा पैसा चाहिए. दे विल अप्रोच क्यूआईबीज थ्रू सर्टेन स्कीम्स टू इन्वेस्ट इन एआरसीज इन ऑर्डर टू रिकवर दिस एनपीए लोन. अब क्यूआईबीज इन्वेस्ट करेंगे with respect to recovery of any particular loan which is backed by some security. So then ARCs in return will offer security receipts to QIBs कि आपने इस secured loan जो NPA हो चुका था उसके against इतना investment किया है in order to help us recover that loan, and if not what will happen, and when recovery is being done how the profit will be divided or what are the terms of that scheme. तो ये जो receipts issue की गई हैं in return of that investment, these are security receipts, and these security receipts are included in the term securities. Next that is included in the definition is units or any other instrument which are issued to the investor under any mutual fund scheme. इसमें एक explanation भी added है कि ये clear है that securities will not include any unit linked insurance policy or scripts or any such instrument or unit by whatever name called
which provides a combined benefit risk on the life of persons and investment by such persons and issued by an issuer. तो इसमें ULIPs included नहीं होती है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज और स्क्रिप्ट्स which have a combined risk benefit. Next is any certificate or instrument issued to an investor by any issuer being a special purpose distinct entity which possesses any debt or receivable including mortgage debt assigned to such entity and acknowledging beneficial interest of such investor in such debt or receivable including mortgage debt as the case may be. तो कोई भी सर्टिफिकेट अगर किसी इशूअर ने इशू किया है to any investor acknowledging the beneficial interest of such investor in such debt or receivable, वो भी एक security होगा. Next is included the government securities, then such other instruments as may be declared by the central government to be securities and rights or interest in securities. So जो भी हमने securities पढ़ी है उनमें अगर right या कोई interest भी हो तो उसे भी security कहा जाएगा. This is the entire definition of securities that is mentioned under Securities Contract Regulation Act. To see how much you have understood from this concept, you can visit this link. You can find the link in the description below. And here you will find Take Quiz option. Take the quiz. You can download the PDF related to this conceptual video. You can take the quiz which will help you revise, which will help you analyze how much you have understood the concept discussed in this video. तो क्विज लेना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. आफ्टर यू हैव वॉच दिस वीडियो, गो एंड टेक द क्विज, गो एंड चेक आउट योर अंडरस्टैंडिंग. आज के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे वीडियो में इतना ही. प्रिपेयर 50% फास्टर विद iExamB. सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू.